Hello, students and our viewers. Welcome to Educational Journey. This is another live session for University of Science and Technology or UST South Korea, and it is all about graduate degree scholarship program at UST Korea. University of Science and Technology in Korea provides the highly paid scholarship, uh, and it offers uh, so many majors for this scholarship. The University of Science and Technology has almost 32 campuses all over the Korea, and every campus has some number of majors for the PhD and master's degree programs. This scholarship program is only for the master's and PhD uh, degrees because UST just offers the master's and PhD programs at the 32 campuses. Generally, they take the scholars or they select scholars in 2 semesters every year, and you can apply for the both semesters when the applications are announced. This time, they are going to announce the application guidelines for the fall 2021. So we are discussing all the requirements and how you can apply and what are the documents required, how you can fill the application forms, and how you can write or you can submit your recommendation letters and other things, whatever is related to the UST South Korea Scholarship Program. So I'm doing these live sessions to guide you with the complete information which is already provided by the UST Korea on their official website. But there are some confusions, so I'm just discussing these things to clarify these points for the viewers and the students. If you have any question, you can write in the comment box, so I will answer your questions. Assalamu alaikum wa alaikum assalam, Shadia Noreen. Uh, thank you for joining us again. Application process online or offline? Yes. The application process is generally online for the UST South Korea. So you can fill the application form as I discussed yesterday, that how you start this application process. So one by one in coming days, we will discuss different application forms and how you can write or submit. Yesterday I also discussed how you can submit the recommendation letter. So there are two ways for the recommendation letter. Other processes all online, but for the recommendation letters they give you two options. Either you want your recommenders to submit this recommendation letter for you through online link, or you can select the offline procedure for the recommendation letter. In first case, if you select the online recommendation letter submission option, and then you will provide the email address and phone number and further details of your recommender on the application form which is online. When you will send or you will submit that form, then your recommender will get a link, and at that website or at that link he can provide your information and he can write recommendation letter for you, and he can submit uh, through that online process or online system. And if you select the second option, which is offline, like you can send by the post office, so you will ask your recommender to write a letter and seal it, and then you can send it to the UST on the given address via the post office or whatever is the courier service you want to select. इसमें GPA requirement कितना है? शाजिया नौरीन, इसमें कोई ख़ास GPA वगैरह रिक्वायरमेंट इस तरह से नहीं है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट मोस्टली है वो आपका आइट्स स्कोर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज़ मिनिमम 6 रिक्वायर्ड, ओवरऑल बैंड 6 आपका होगा तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. विदाउट आइट्स यू कैन नॉट अप्लाई. एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, no sorry, if you are applying for the PhD degree program at UST, then I think you must have. Why I said I think? Because
It is not mentioned on the website or the instructions, it is a general experience and what we see every semester, that the students who get the positive reply from the professor, he or she is selected for this scholarship, or the professor recommend him for the selection. If you cannot get the positive response from professor, like positive email, uh, then also you can try your luck for the PhD program. But for masters it is okay. If you do not get any email reply by the professors, then you can also apply. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस बात पे होनी चाहिए कि आपको प्रोफेसर एक आध रिप्लाई कर दे, कोई एक प्रोफेसर आपकी फील्ड का। तो फिर जब वो सिलेक्शन और शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो जो आपका प्रोफेसर जिसने रिकमेंड किया होता है, वो यूनिवर्सिटी को बताता है कि यस, मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, और अगर आपके पास मतलब स्कॉलरशिप की पोजीशंस हैं, तो इसको मैं सुपरवाइज करूँगा। देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फॉर पीएचडी, लाइक 95% और 90% चांसेस दैट यू विल गेट द स्कॉलरशिप। अगर मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रही हैं या कर रही हैं, या मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी, देन आल्सो आपको करनी चाहिए ईमेल्स प्रोफेसर्स को। अगर आपको प्रोफेसर का रिप्लाई आ जाता है तो तकरीबन आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, लेकिन इवन अगर आपको रिप्लाई नहीं आता प्रोफेसर का, तो देन आल्सो यू शुड ट्राई योर लक फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम और मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम। उसमें हमारे दोस्त कुछ थे जिनको रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उनका आइल्स वगैरह अच्छा था, उन्होंने फॉर्म अच्छी तरीके से फिल किया और उनका एडमिशन हो गया। एक दोस्त तो अभी लास्ट सेमेस्टर में यहाँ से करके जा भी चुके हैं मास्टर्स, तो अब वो किसी और कंट्री में जा रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि पीएचडी के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आपको प्रोफेसर का रिप्लाई आ जाए। आज के सेशन में हम जो मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ यू कैन गेट द acceptance or at least the positive reply by the professor, or how you can approach to different professors. And then I will give you short or brief, uh, like a brief pattern for an email writing to a professor, और या मैं आपको ईमेल लिखने का एक शॉर्ट सा तरीका, लाइक आपको जर्नल गाइड करूंगा कि हाउ यू कैन राइट एन इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल ईमेल for the master's or PhD supervisor. And then I will give you some tricks, or I will share my experience, or I will give you suggestion for the CV writing. So what should be in your CV? तो ये चंद चीज़ें हैं जो आज के हम सेशन में कवर करने जा रहे हैं. So also I will take your questions and I will answer your questions. Next question is, sir, is it mandatory to get acceptance letter from professor for university track in GKS? It is not mandatory, Rose Khan. मैंने आपको बताया था कि it is not mandatory for GKS scholarship, but if you can get acceptance, or not the letter exactly, but just an email reply is okay, then definitely he is going to recommend you to university, that I will supervise this student. So please shortlist from your side, because professors are everything here in university system. Like if they recommend to university that my student want to apply for the admission, even then he can ask admin to open the application separately for him, but not for GKS. Like admission process is different, but yes, he can give you पॉजिटिव रिस्पॉन्स, देन ही विल रिकमेंड यू। अगर वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो जो ये जीकेएस का स्कॉलरशिप है, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, उसके अंदर जब यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग हो स्टूडेंट्स की, तो वो आपको रिकमेंड करवा सकते हैं बहुत आसानी से। देन इट इज़ अप टू द स्कॉलरशिप अथॉरिटी विच इज़ NIIED। वो आपको सिलेक्ट करते हैं, दे आर गोइंग टू सिलेक्ट यू और नॉट, और व्हाट इज़ द कंट्री कोड ऑफ कोटा फॉर यू, और some things like this. But as for the first selection criteria, he can recommend you, he can give you some benefit, or he will try to uh, ask the university to recommend you for this scholarship. Second, next question for this scholarship, elite is compulsory. Can I use any other proficiency test? You mean IELTS, IELTS, International English Language Test. I will write here.
It is IELTS score 6 is required for university. This IELTS, which is overall 6 band. This band is required for the University of Science and Technology Scholarship Program. So I'm going to actually write some things today. So I opened this uh, PPT. So how to get acceptance for UST South Korea. Yesterday we discussed that how you can find professors in your field from the University of Science and Technology website. I hope you watched my previous session, which was yesterday, and you can search professors now. Chazi and Orin, you cannot use any other proficiency test result. Proficiency test result mean TOEFL is okay, TOEFL, but not the other something like university certificate or something. That is not okay for this scholarship. I'm going to show you the information which is provided by this. TOEFL is okay and IELTS is okay. This TOEIC is not going to be valid for this year and next coming admission. So cancel this one if you are planning to appear for the English test course. So always go for the IELTS so you can use it anywhere in the world. Uh, Otherwise, you can go for the TOEFL. It is required at least 6 band in academic IELTS. The next question is, sir, to how many professors can I send email for acceptance letter at a time or anyone? One thing you need to remember, you cannot send by CC, okay? Even if you want to send email to two professors, then write a separate email to each professor always. And next thing is at one department you can send to 2 to 3 professors, because mostly 2 to 3 professors are working in the related areas or research areas. So you can send, I think, up to 3 professors in one university or one department at least. To other departments, yes, you can again send to 3 professors. तो आप एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 प्रोफेसर्स को ईमेल कीजिए। अगर रिप्लाई नहीं आता तो आप 3 से 4 दिन के बाद एक रिमाइंडर उसी ईमेल के रिप्लाई में लिखें कि सर, आई सेंट यू एन ईमेल एंड माय सीवी फॉर आई एम आस्किंग फॉर द सुपरविजन for our GKS scholarship, and can you recommend me for the scholarship by the university track or something. Sir, I am doing MS Chemistry from ComSat Islamabad. I will complete my MS in July 2021, inshallah. Kindly tell me how to gain scholarship in Korea and tell me whether there is a disability quota or not. Oh, yes. I got your, I think, message on somewhere, Facebook or something. Uh, First of all, I salute you and that you are still studying, or you are continuing your study. And I you should contact me anytime. You can contact me anytime for any help, so I will try you to provide complete guidance and further details for each scholarship. Always join me for these YouTube sessions, and you can ask your questions. For the disability quota, I exactly do not know any scholarship here which has some quota for the disabled person. But you can apply if you have IELTS or not, I do not know. And you can also apply to Global Korea Scholarship Program. Uh, I conducted some sessions for this Global Korea Scholarship Program already. So you can just go to my channel. I will show you here exactly. So you can go to my channel and go to playlist, and there is a playlist for the this GKS graduate degree program. So there are some lectures and I explained all and everything. So that is one option. So next option for you in the chemistry field is this one, which I'm going to discuss, because University of Science and Technology will pay you high amount, and you can even have company of one of your family members here in case of like you if you get this scholarship, so you can invite your family members to stay with you as well, like your spouse or anyone from the family. uh, so you can go to my channel and I will show you in a minute. Next, I'm moving next. So I will answer your questions. You can write. I do not know about your exact name, chat Maxon.
and you can give it a try if you have IELTS 6, or if you can get this result of this by the first week of April, because the deadline will be in where is this one? Yes, so the deadline will be 8th of April, and before that, if you can submit your IELTS score and tuition fees and recommendation letter by your professor with the expected graduation certificate, you can apply. So it will help you, I think, and it will give you about $1,350 per month for the PhD program. अगर जीकेएस में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या और कहीं और साल में अप्लाई नहीं कर सकते? मुझे किसी ने बताया है कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप में। नो, यू आर कंफ्यूजिंग टू थिंग्स। जीकेएस के अंदर आप या तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं, या आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जीके जीकेएस के अंदर, मतलब जीकेएस के लिए दो ट्रैक्स हैं, उसमें से एक ट्रैक पे आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उसके अंदर आप ज्यादा ट्रैक्स पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे जीकेएस में, ठीक है। लेकिन अगर आप, सॉरी, फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अप्लाई करना चाहें, इवन प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें, किसी और यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहें, तो आप हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। और स्कॉलरशिप के लिए आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और होता भी ऐसे ही है दैट यू अप्लाई फॉर द 4 to 5 ऑप्शंस एंड देन यू सिलेक्ट द बेस्ट वन इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर सो मैनी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। My BS CGPS 3.3 and MS CGPS 3.3. I have done research in PS as well, and I will publish research paper in MS, inshallah. Inshallah. So continue your hard work and try to publish these papers in some good journals. If you can publish only one, that will be also good, and if you can publish more than one, that would be great. So आपको करना यही है कि आपका जीपी बहुत अच्छा है, लाइक 2.64 से ज्यादा अगर आपका है तो दैट इज गुड इनफ टू गेट ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। बट द थिंग फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया इज यू नीड द आइल्स स्कोर 6 बैंड ओवरऑल। तो आपको वो 6 बैंड जो है आइल्स का वो चाहिए। वो आप अगर अप्रैल 8 से पहले पहले सबमिट कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने जाना ये है, ये जीकेएस प्लेलिस्ट में जाएंगे और जीकेएस के जो ये प्लेलिस्ट नजर आ रही है आपको यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो इस पे जाके ये 9 से 10 वीडियोस हैं, इनमें से पहली चार चार तक अगर आप देख लें, बाकियों में ये है कि क्वेश्चन आंसर हैं, तो वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आंसर थे, बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं स्टूडेंट्स को। सो आई डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आपको ये सारा तरीका यहाँ से समझ आ जाएगा और आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप जमा कराएं, और आप अपना डिसेबिलिटी या इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी अटैच कीजिए, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आई थिंक यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ट्रैक से। अदरवाइज आपको मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइड करता रहूंगा, वो भी आपके लिए अच्छी ऑप्शंस होंगी इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही मोटिवेट रहना है आपने हमेशा, और अप्लाई करते रहना है जहाँ पे भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी हेल्प देन प्लीज़ सेंड मी अ मैसेज बाय द फेसबुक, और यू कैन कमेंट इन द यूट्यूब चैनल, और you can even contact me through the Instagram. So the link is given here at the bottom, instagram.com/educational.journey/, or you can contact me facebook.com educationaljourney15. So this is my ID for Facebook and Instagram. Hello sir, my organization not providing NOC for higher studies and my embassy is requesting for same. Will it be a problem? Could you suggest a workaround? Jyoti Sihag, if you do not want to leave this your job, then it is difficult because you need this NOC for the embassy track at least. Otherwise, you should go for that university track. Why you don't go for the university track? Yes, that will be good. IELTS this month, if you can do IELTS, that will increase definitely your chances, and you can get the better option in the future. So I think you must prepare for your IELTS well, and then you can even before that you can start application process, like sending email to professors and contacting professors, and you can apply to as many scholarships
एज पॉसिबल फॉर यू। आपको बस यही है कि मोटिवेट रहना है इसी तरह से, और स्कॉलरशिप जितनी भी ऑप्शंस आपके पास आती रहें आपने उनको अप्लाई ज़रूर करते रहना है, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपका ज़रूर हो जाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, सर, फॉर पेरेंट्स प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, parents proficiency, what is parents proficiency certificate? Can I send my parents to missile or PRC? What they asked for the citizenship, you can send ID card if it is in English. Domicile, I do not know, because domicile is just used within Pakistan or within your country. For outside, you cannot send domicile. So if you have national ID card in English, then you can send. If you have a family registration certificate issued with your father's name, that is also okay. Otherwise, you can send passport copies. Yes, I answered to your question for the citizenship. All right. So now I'm going to start this actually for the University of Science and Technology, how you can get the acceptance, or what is the process. I hope everybody got the idea that how you can find the professor's detail or his email address, and how you can find a major in University of Science and Technology website. If you do not know how to find a professor or professor detail, or how to find a major in University of Science and Technology, or how you can find details about all 32 campuses, then please comment. I will explain again. But here I'm going to start how to get acceptance for the UST uh, scholarship program. First of all, you are going to shortlist professors, but after exploring all majors and campuses. So all 32 campuses are offering different majors. Someone is offering three majors, someone is offering four majors. Some professors are even working in different direction, in environmental science or something. So you can search and read his major research interests and then shortlist. After shortlisting professor, you should send email to professor. So it will be very. I will give you details. Give you the details in next slide. Okay, so I will explain how you should actually write this email. But you will write email to professor and attach the CV. Next slide. So after email, I will give you the idea how you can write the CV for this. So you will write an email to professor or professors at, like, you can write to 3 to 5 professors. Okay, professors. So it depends on you and your major. Then you will attach the CV and will ask him to for the supervision or possible position in his lab under the UST scholarship program. So these are the things. What you will do in case uh, you get the positive reply, your process is easy now. But in case you do not get any reply, what to do? So what you will do if you do not get any reply? Uh, so you will go for the reminder to professors. After after 1 week, you can send a reminder for to the professor that you already sent an email, and please, if you have any position available in your group, then please reply to me, or if you need any further document or something, I can provide to you. Okay, so even if you do not get this reply after sending a reminder, then you can even choose some more professors. uh, Otherwise, send email to some
other professors in the same major in field or in major in say in the same major, okay, in the same major or related to you or your research area. So hopefully someone will, or at least one or two will reply to you either negative or positive. If they reply to you positive, then that is good. For MS, you can apply for MS PhD both, but for MS you can get this scholarship without positive reply, but for PhD mostly UST select students with some acceptance or slash positive reply, or professor directly recommend to university because he wants you to be his student, and then he can recommend to university for the scholarship, and then they will look for the further details about your profile and further required documents, and even they can ask you some more documents in case something is missing. So this is just a simple process that you will shortlist professors and then email to professor with the CV. In case you get the positive response, he will guide you that apply for this scholarship or this submit this application and submit your fees and etc, and then you can get the scholarship. But in case you do not get any reply, then you can send any reply a reminder in the same email, in reply to the same or previous email to each professor. Otherwise you can also select some other professors and send them email. So you can again send them email, or you can send them reminder. For the MS, you can get this scholarship without positive response or acceptance, but for PhD most of the time they select the students who already uh, have this acceptance or positive reply, or professor is recommending him to university. तो आपको ये वाला तरीका इख्तियार करना होगा, प्रोफेसर्स फाइंड आउट करने हैं, शॉर्टलिस्ट करने हैं, फिर ईमेल लिखनी है, उसके साथ सीवी अटैच कर दें। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने पर आपका प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है, और अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो एक रिमाइंडर भेज दें एक हफ्ते के बाद उन प्रोफेसर्स को। फिर भी अगर रिप्लाई नहीं आता तो आप कोई और प्रोफेसर भी चूज करके उनको भी ईमेल कर दें फॉर पीएचडी एंड एमएस वट एवर इज योर डिजायर्ड डिग्री। तो आप एमएस के लिए जो है इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स या एक्सेप्टेंस के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ये रिस्क होता है कि आपकी जो ट्यूशन जो एप्लीकेशन फीस आपने जमा करानी है वो थोड़ी सी आपकी हो सकता है, इनकेस अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो ज़ाया हो जाएगी। लेकिन पीएचडी के लिए ऑलमोस्ट वही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिनके पास प्रोफेसर की रिकमेंडेशन, एक्सेप्टेंस या पॉजिटिव रिप्लाई होता है फ्रॉम द यूएसटी फैकल्टी मेंबर्स। तो अब ईमेल आपने कैसे लिखनी है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल विद दिस, दैट हाउ टू राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर। So they start with, I hope you are doing well, or this email will find you something like in good of your health or best of your health. So do not write this. Start with your introduction. Introduce yourself, okay, and provide your educational background. So you need to introduce yourself. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, सर आई एम ए बी सी डी and I did my bachelor's or I did my master's in, for example, material science with the CGPA this from the university like National University of Science and Technology, whatever your university. And I also have, और आई पब्लिश्ड सम, आपने कुछ पब्लिश किए हैं रिसर्च पेपर 2 और 3 और जो भी है, एंड आई डिड माय मास्टर्स थीसिस। टाइटल लिख दें एंड इनफ लाइक 3 to 4 lines in email body. Then you will move on to a linkage paragraph, second paragraph, which will be link between your background and skills to the professor's profile. Professor's
प्रोफाइल। तो वो क्या होगा कि प्रोफेसर की प्रोफाइल और आपकी जो स्टडी है या जो आपका बैकग्राउंड है उसके दरमियान आपने एक लिंक क्रिएट करना है। हाउ यू विल डू दिस? यू will write your like if you are applying for the masters, then you can write your subjects, previous subjects, and your final year project or something, or semester projects, or you can mention your skills, courses studied, and then you can write the experimental techniques or experience or equipment handling, whatever is your or your expertise in these fields. And then you can finish it with uh, the research interest in uh, professors uh, professors related uh, research directions or areas, uh, mm, like write 2 to 3 keywords related to his research direction or his research work or his group's research work. So you will write that you want to continue your education and you want to do research in this research direction. Then third paragraph you will start with writing that you already know about his research group. Not, you will not write like you already know about his research group, but like you will make a link that you got the link for his research group, and you studied some of his research papers in previous degree or during your previous master's thesis or bachelor's degree program. And his you can mention that the available projects in this direction are in particular aligning with my research interests. So you will ask him indirectly that you want to continue your studies or your master's or PhD program under his supervision. Then you can ask then you can ask him for supervision or master's or PhD position position in his lab or research group. Sorry, in his lab or research group. And then you will write a line. This will be like first paragraph 3 to 4 lines. This will be 6 to 8 lines in a normal email. And then you will write this one about 3 to 4 lines just, or even 2 to 4 lines. And then you will write 1 or 2 liner that you will write that you are sending cv him your cv with this email and looking forward for his reply. And you can also write that you are ready for an intro, or you can provide further details or any documents required for the um, professor. तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं. एंड देन यू विल मेंशन योर नेम लाइक काइंड रिगार्ड और सिंसियरली, your full name and your email ID and your country or your major or your university. So this is the major criteria to or pattern to write an email to professor. So by writing the email and following this pattern, I hope that you will get a reply, or at least the professor will read your email at least. And one more important thing is
Subject of the email should be short and concise, or you can say catchy or attractive. Like when you write an email, they ask you to write a subject in the subject line. So it should be catchy and short and concise or to the point, directly to the professor. So you are going to attach the CV. For CV, what is most important is your first page on your CV. Whenever someone opens your CV, then on the first page or at the with the first look, he is going to decide to reply you or not, or you are relevant person or not. So the first page is really important and the most important. So what should be in your CV at the very first page? So your basic information. For the complete CV details, you can check my first video on this channel. So if you do not know how to write a CV, how you can manage different sections within CV, or how to write easily, and if you are writing CV for the first time and you do not know how to control the text from left, right, or top, bottom, margins, and other things in detail, you can check my first video in this uh, channel, and that will give you the complete guide, and you can write your CV within 2 hours if you follow the same instructions given in the video. So write the basic info about yourself, like your name, which will be very bold and very big size. Then your email ID, your uh, email ID, your something like phone number, and sometime nationality also you can mention. And if you want, you can put your picture on the right or left side to this text, which is basic information. Then you will start a section, research interests, and mention 2 to 3 research keywords in bullet points. You know how to insert bullet points like this: 1, 2, 3. These are the bullet points. Even you can write 1, 2, 3 here, by using these options provided in the home. Like these are the bullets I'm talking about. So 2 to 3 research keywords or directions is okay. Then you will see a right education or educational background, and you will mention your degree name, like bachelor's of science in chemistry, or masters of science in chemistry or something. And you will provide your university name in next line, and you will provide the city and country name in next line. And in parallel to these 3 lines, you can provide your on the right side, you can provide the CGP or percentage or whatever is. Then you can write your, if you have done some thesis in masters, and you can write the thesis title in the bold text. And then you can write some uh, 2 or 3 to 4 major subjects you already know about, or you attended in the or your previous degree from your transcript. So you can mention at least 3 to 4 courses if you are applying for the master's program. And then if you have master's degree, then you can mention your research paper submitted or published, or whatever is the status of your such papers, if you have any. Otherwise, you can write a research experience also, like if you have worked in any lab for the research assistant or something. And then you can write the experimental uh, expertise, or you can write experimental techniques used. It will be like the subsection section, and you can write whatever equipment you need.
you know how to handle. And if you have done some experimental work, you can write the methodologies or the experimental setups and something in the bullet point 4 to 6, whatever is the number of experimental setups you used in the previous degree. And then you can write software skills, like if you are from chemistry, chemical, or material science, then origin lab is used for the graphs and other things. And if you know MATLAB, or if you know SolidWorks or ANSYS, or any software related to your degree, or if you know any programming language like Python or C++ or Fortran, or any software skill. But do not mention like Windows 10 or Windows 8, on MS Office, how to. But these are the basic things that every graduate should know. So do not mention those basic things in your. Then you can write your achievements, like achievements and awards. After writing achievements award, directly go to the like if you have any conferences, you can write here, or even you can move further up. Otherwise, go to the references or reference. Provide 2 to 3 references or details of your teachers or professors. So this will be the like general pattern for your CV. You will show your basic information, then research interest, then education, and within that education, master's thesis as well. Master's thesis, and if master's thesis is enough, uh, otherwise, if you have done the undergraduate, then you can mention 3 to 4 for undergrad. You can mention 3 to 4 major subjects related to the research area you want to continue. Like if you have done mechanical engineering and you want to continue in the mechanics of materials or material science, then you can write mechanics of materials and others related subjects. So references are always important. So you must provide at the end of your CV or the last part of the CV. So this is general criteria or general pattern for CV writing. And you have any question for these all things which I explained, you can write now, and I will answer your questions. In next session, we will see that how you can actually fill the application form and how your recommender can fill the recommendation letter, and how you can submit the recommendation letters. If any of you have any question, please write. I will answer your questions now. So these were the things which I wanted to डिस्कस फॉर दिस सेशन। ये वो चीज़ें थी जो आज मैं डिस्कस करने के लिए सोचा था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है मोस्टली स्कॉलरशिप के लिए, दैट यू विल राइट ईमेल टू प्रोफेसर ऑलवेज ऑलवेज, and then you need a good CV, and then you need also a good email body, and subject of an email should be very concise and catchy and to the point. तो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो एक स्कॉलरशिप के लिए एट द इनिशियल स्टेज ज़रूरत होती है, वो मैंने डिस्कस की है। और सिमिलरली गोज फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द ग्रेजुएट डिग्रीज लाइक मास्टर्स एंड द PhD. So you can write your question if you have any, and you can also ask me about Global Korea Scholarship if you have any question for that scholarship. यूएसटी के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो IELTS 6 चाहिए, जो टॉफल के अंदर इंटरनेट बेस्ड और पेपर बेस्ड। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरत हैं, इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए, वो यहाँ पे मैंने कुछ कल बताया था। पहले तो आपको प्रपोजल फॉर स्टडी होगा, लाइक स्टडी प्लान होगा सिमिलर टू ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, और उसी तरह का है एक फॉर्म गिवन है, उसके अंदर आंसर्स वगैरह देने होते हैं जैसे आप लिख चुके होंगे ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे भी उसी तरह का ही तकरीबन पैटर्न है।
Then you need be bachelor's degree, certificates, ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स के लिए डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। अगर आप मास्टर्स में हैं और एक्सपेक्टेड हैं टू ग्रेजुएट इन जुलाई अगस्त, फॉर द ट्रांसक्रिप्ट यू कैन सबमिट दी थ्री दिस ट्रांसक्रिप्ट अंटिल थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट आप जमा करा सकते हैं जो कि आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। और इसी तरह अगर बैचलर्स में आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो आप अपने 6th और 7th सेमेस्टर की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, रिजल्ट कार्ड होगी, वहां तक आप जमा करा सकते हैं। Then you need the master degree thesis, just a title and abstract is enough. Form number 1 is related to this. Then continuing official test score or English test score like IELTS and other. The photocopy of your result card is required here. Then if you have any employment or something you want to mention, then you can submit. And then it comes with the recommendation letter. यहाँ पे recommendation letter के दो तरीके हैं जो मैं आज भी स्टार्ट में इस सेशन के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आपने करने हैं। तो ये सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेशन। और जी आपके पास ये प्रीवियस सेमेस्टर के डेडलाइंस वगैरह हैं, इनको अभी रिप्लेस होना है। स्केड्यूल होगा इस बार 18 मार्च टू 8 अप्रैल 2021। तो इससे परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी, ये नया 3 तारीख से ये अपडेट हो जाएगा। तो जी ये आपकी थी कुछ चीज़ें जो आज के लिए ज़रूरी थी बताना। आइट्स के अंदर 6 बैंड होना ज़रूरी है इस स्कॉलरशिप के लिए, और फर्दर एवेल्यूशन क्राइटेरिया वगैरह जो है एवेल्यूएशन, और ये रजिस्ट्रेशन जो है आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है, स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इनके बारे में फ़िलहाल आपने कोई परेशान नहीं होना। ठीक है, तो कल हम फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 2 वो जो चीज़ें हैं उनके लिए हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे फिल करने हैं। तो आज के लिए आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन फॉर द टुडे, and these are the 32 campuses. Information is given here, different fields are given. ये आपको मैंने कल के इस लेक्चर में जो है वो बताया था कि ये आप ऑनलाइन कैसे उधर वेबसाइट पे जाके कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद आपको प्रोफेसर्स कैसे मिलेंगे इन ये कैंपस और इन मेजर्स के। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल एंड जियो स्पेस इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, एडवांस मटेरियल इंजीनियरिंग, biomedical engineering and energy engineering, environmental engineering, data and high performance computing, nanomechatronics, plant system and machinery, environment and energy mechanical, biotechnology is related भी यहाँ पे nano biotechnology, environmental biotechnology and further some other fields in bioanalytics, and then industrial technology, industrial materials and smart manufacturing engineering, robotics, green process and energy system engineering, advanced energy and system engineering, renewable energy engineering, and some other majors in this. So similarly, energy and power conversion engineering, radiological and medico oncology sciences and advanced device technology, और भी आपको यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखना है मास्टर्स, और ये इंटीग्रेटेड है, मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी 5 ईयर प्रोग्राम। दिस इज पीएचडी एंड दिस इज मास्टर्स। तो आपको ये क्रॉस का मतलब है कि नो नॉट लाइक प्रोवाइडेड और इट्स नॉट इंक्लूडेड फॉर द एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे एक्सेप्ट, यहाँ पे मतलब कि यस यू कैन अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। तो ये सारी आप इस तरीके से देख सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, एडवांस्ड मटेरियल, केमिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे आपके हो जाएंगे सब फील्ड्स और मेजर और समथिंग। ये मैंने आज डिस्कस कर ली सारी चीज़ें जो आपको मेजरली स्टार्ट पे चाहिए थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन फिल दी एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 एंड फर्दर। तो आपका आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है आज के सेशन के दौरान में अब यूएसटी के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोग ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे। तो आई थिंक अभी तक आप ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं।
आपको यूएसटी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, वो जिसका भी आने वाला है एडमिशन, और अगर आपके पास आइल्स आप कर सकते हैं लाइक एंड ऑफ मार्च तक, और रिजल्ट आप ले सकते हैं एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट फंडेड है, ये भी यूनिवर्सिटी 32 कैंपसेस हैं, उसके अंदर आपने मेजर देखे हैं कितने ज़्यादा हैं, हर कैंपस के अंदर 3 4 5 मेजर्स ऑफर हो रहे हैं। तो लाइक साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी और इस तरह की जो फील्ड्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, खसूसन केमिस्ट्री, केमिकल, मटेरियल साइंस, तो मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, लाइक इंजीनियरिंग एंड साइंसेज, तो उन स्टूडेंट्स के ज़्यादा चांसेस हैं जो इस तरीके की बायोटेक्नोलॉजी, बायो से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, तो ये सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस भी ज़्यादा है, स्कॉलरशिप भी बहुत हाई है। फॉर पीएचडी दे गिव यू 1.6 million Korean won every month, and for the masters they will give you 1.4 million won। तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ, और आप आसानी से यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में 1.2 मिलियन कोरियन वॉन इन मास्टर्स, तो आप आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं इवन विद द फैमिली, एंड you can enjoy your life with the research and studies। तो जी शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज के सेशन में। आई होप कि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं कमेंट्स में, तो हम कल उसको आंसर कर देंगे, या आप कल के लिए क्वेश्चन अपने रेडी रखें और इसी तरह हमें ज्वाइन करें। तो कल के दिन हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर कैसे फिल करना है और सेंड कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई विल सी यू टुमारो, एंड बाय बाय।